programs. So let's welcome Meena Devi. She is the president of Yogyata Swa Sahayata Samuh, an SHG in Madhya Pradesh Balaghat district. Padma Tashi. She is the production manager at Looms of Ladakh Women Cooperative Limited in Leh. Mini Varghese, mentor resource person of Kerala's Kudumbashree mission. Sabita Behera. She works at Jal Saathi for the Odisha government. I would also like to welcome our special guest, Hina Ben, Vice President of SEWA, Dr. Meenu Singh, Director of AIMS Rishikesh. We will soon be joined by Sunita Narayanji, Editor of Down to Earth and Director General of the Center for Science and Environment. Now, before I request our speakers to tell us about their initiatives, let me tell you a few facts about the sheer size and strength of women SHGs in our country. In the 1970s, when the concept was still taking shape, there were only a few informal groups in a few rural pockets. Today, there are about 9 million SHGs with nearly 100 million women members. This means, on average, India has 14 SHGs in a village, and every 8 Indian woman is an SHG member. Today, these groups are regarded as the world's largest microfinance project. As of February 2023, these SHGs have availed loans of rupees 2.54 lakh crore, and as of February 2024, they have disbursed loans of around rupees 1.7 lakh crore. The way governments are pursuing SHGs in their policies and programs is quite amazing, because India never had such an organized association of women to work at the village level. All these women now touch nearly every household. Our analysis shows that 10 states have declared budgetary support to the tune of rupees 5 lakh crore directly to SHGs. These women are now actively working with governments and implementing various schemes, from running health services to water and waste management to overseeing slum redevelopment. In a way, SHGs of India are now empowering the country. So, now let's hear from these formidable ladies. I would first request Hinaji, who is the Vice President of SEWA. Now, SEWA is one of the first women SHGs in the country. It was formed in the 1970s. Women must generate and control the capital. This has been the guiding principle of SEWA. So, Hinaji, how has your 50 years of efforts helped empower women? Please tell us. नमस्ते, मेरा नाम हिना है और मैं सेवा में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 30 साल से मैं सेवा के साथ जुड़ी हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेवा एक नेशनल यूनियन है और भारत के 18 राज्यों में हम लोग काम करते हैं और 30 लाख बहनें हमारे साथ संगठन में, असंगठित कामदार बहनें जो है वो जुड़ी है। तो सेवा में जैसे हमारे फाउंडर इलाबेन है, उनका यही चिंता था और यही वो सोचते रहते थे कि गरीबी जो है वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो ये गरीबी को हम कैसे मिटाए और असंगठित कामदार बहनों के जीवन में गरीबी को हम किस तरह से निकाले ताकि वो भी एक सस्टेन हो सके, वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो उसके लिए हम लोग जो बचत ग्रुप बनाते हैं, तो सबसे पहले जब सेवा का शुरुआत हुआ 72 में, और तब से 2 साल हमारी बहनें यही बोलती थी कि हम जो भी कमाते हैं उसमें हमारा 50% तो रेंट में चला जाता है, हम लारी गल्ला रेंट पे लेते हैं, हम कहीं से उधार लेते हैं तो वहां हमारा पैसा चला जाता है, तो हमारा तो पैसा बचता ही नहीं है, जो भी हम कमाते हैं वो चला जाता है। तो हमारी अगर खुद की बैंक हो तो वो बैंक के थ्रू हम लोन, छोटी छोटी लोन लेके हम लोग काम करें ताकि जो ये पैसा हम रेंट पे देते हैं वो हम लोन के हफ्ते भरे और हमारा खुद का एक एसेट खड़ा हो।
तो 1974 में हमारा सेवा बैंक, जो स्वाश्रय महिला सेवा कोऑपरेटिव बैंक है, वो बना। और ये बैंक बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बहनें अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक राज्य में जो बहनें मेंबर बनी है वो ग्रुप में बचत करे, इंडिविजुअल बचत ना करे, लेकिन ग्रुप में वो 100 रुपया, 200 रुपया उस तरह से वो बचत करे ग्रुप में। ग्रुप का दो फायदा है, एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ता है ग्रुप में जुड़ने से, और दूसरा कि उनको कोई भी अगर बिजनेस करना है, कोई भी अगर ट्रेड के रिलेटेड उसको काम करना है, तो ग्रुप का जो फंड है वो उसको बहुत महत्व रखता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बहनें गरीबी में से बाहर निकले, तो उसके लिए उनके पास जो भी रोजगार के साधन है, वो अपना खुद का परंपरागत ट्रेड में भी काम करती है, जैसे एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, क्राफ्ट कारीगरी है, वो अपना खुद का परंपरागत ट्रेड है। तो उसमें भी वो नया टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन, नया मार्केट ढूंढने के लिए चाहती है, तो उसको पैसा चाहिए। तो ये ग्रुप के द्वारा, हाँ, बहनों को इंडिविजुअल ग्रुप के द्वारा बहनों को एडवांस मिलता है, और फिर वो एडवांस से बहनें अपना खुद का एसेट खरीदती है, क्योंकि बहनों के नाम पर एसेट अगर होगी तो बहनें उसके ऊपर अपना धंधा रोजगार मजबूत कर सकती है। तो एसएचजी हमारे लिए सिर्फ बचत करना नहीं है, लेकिन एसएचजी के द्वारा बहनों का एसेट क्रिएट कैसे हो, बहनों के नाम पर मिलकत कैसे खड़ी हो, बहनों के नाम पर मूड़ी हो, ताकि उसको कुछ भी आफत आती है, कुछ भी उनको घर में अच्छे बुरे समय में वो उनके पास पैसा है, तो वो कहीं लाचारी नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर भार दे रहे हैं। और 50 साल में हम देखें तो ये एसएचजी ग्रुप बने हैं, बहनों का इससे एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ा है, दूसरा बहनों का जो अपने खुद के घर में, परिवार में, गांव में एक मान सम्मान और स्टेटस बढ़ा है। तीसरी मैं बात करूं तो बहनों के नाम पर एसेट हुई है, जैसे कोई बहन खेती की जमीन गिरवी रखती है तो उसको छुड़ानी है, तो बैंक के साथ लिंक करके हम उसकी जमीन छुड़ाते हैं, लेकिन जमीन के जो 7 बार के उसके जो डॉक्यूमेंट है, टाइटल, उसमें हम बहनों का नाम जुड़वाते हैं, ताकि बहन और भाई दोनों का सेम ओनरशिप रहे। ऐसा ना हो कि जमीन बहनें काम करती ही जाए और बहनों के नाम पर कुछ एसेट ही ना हो, और कल को कुछ भी आफत आती है तो भाई लोग जमीन बेच के पैसा खड़ा कर लेते हैं, लेकिन बहन तो पूरे परिवार का सोचती है कि एक जमीन है उससे उनका परिवार का रोजगार चलेगा, आने वाली पीढ़ी का रोजगार चलेगा। तो इस तरह से हम जो भी लोन देते हैं तो वो बहनों को बिजनेस में कैसे काम आए, उसके ट्रेड में कैसे काम आए, तो इस तरह से हमारा पूरा काम करने का रवैया रहा है। तो आज हम देखें तो हमारी बहनों की खुद की कंपनी बन गई है। ये एसएचजी में ग्रुप में जुड़ने के बाद बहनों का बार्गेनिंग पावर, कलेक्टिव ऑर्गेनाइज इतना बड़ा है कि बहनों ने अपनी खुद की कंपनी बनाई है। जैसे एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो बहनों ने रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी करके कंपनी फॉर्म में रजिस्टर कराया है, जो किसानों से वो बहनें डायरेक्ट खरीदती है, फिर प्रोसेसिंग करती है, पैकेजिंग करती है, और एंड ग्राहक जो है उसको बेचते हैं, तो उसको भी अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन फूड मिलता है। तो ये एसएचजी 50 साल की जो हमारी जर्नी रही, उसमें कि बहनों का ये पावर बढ़ा, तो बहनें आज कंपनी चलाने की काबिल हो गई है। I'd like to say here that SEWA has a network of around 2.1 million women members who are in यस। 125 trades ranging from healthcare, banking, जी। insurance, childcare, जी। housing, legal services, videography, यस। research, training, यस। and capacity building. यस। That's really यस। wonderful, Hina Benji. Now, I would like to request Mini Verghese. She is associated with Kudumbashree of Kerala. Now tell us, Minnie, something about how Kudumbashree plays a key role in implementing government programs in Kerala. Yeah, good afternoon all. First of all, happy Women's Day, all of you.
See, Kudumbashree as a poverty eradication mission in Kerala plays an important role and making history in the past 2.5 decades in Kerala. Actually, I joined in Kudumbashree in the year of 2000 when it started in my Grama Panchayat. My journey with the Kudumbashree started as a secretary in one neighborhood group, then became the Area Development Society, that is one of the federation of the NHG, and later became the Community Development Society Vice Chairperson. In the year of 2010, I was elected as a Vice President of the Grama Panchayat. In the year of 2015, selected as a mentor resource person in Kudumbashree National Resource Organization. Basically, Kudumbashree is a differ to other self-help group that it is a neighborhood group which is formed by the neighboring women, not on the basis of any kind of religion, caste, and the politics. So, the Kudumbashree members are the part of plan preparation process in the Grama Panchayat. They have an important role in mobilizing a pupil to the Gram Sabha and discussing at the grassroots level planning. It is mandatory that the Area Development Society and Community Development Society members are the part of different working groups. These working groups are formed for making the plan for the Grama Panchayat. That is GPDP, annual plan preparation. And in Gram Sabha also, the neighborhood group members, that is Kudumbashree members, raising the sound and the demands not for themselves only, but for the others, those who have no voice and vulnerable people in the society. So in the last election of the local bodies, that is the Grama Panchayat elections and 16,876 women from the Kudumbashree network contested and 7,071 members won. These include 146 community development chairperson, that is leaders of the Kudumbashree. 50 seats are reserved for the women for this three-tier system. Of them, 64% are the Kudumbashree women. This is not a small thing. They are also shining in administration also. They got the experience and the confidence being the part of Kudumbashree. They're making clear that knowledge is the power. Lot of things Kudumbashree doing in Kerala. One of the most important thing is buds. That means it is a social commitment activity such as Asraya and a Destitute Free Kerala project by the government. So buds is a care home for differently abled children. While Kudumbashree members are doing a survey, they noticed that the families having differently abled children, the parents cannot go for their job. One of the member have to stay back at home for taking care of that child. The Panchayat, with the support of the Panchayat, the Kudumbashree discussed with this issue, and they decided that why we cannot start a school, day school for them. Thus, the parents can go to the job also. With the support of Gram Panchayat, Kudumbashree started the birds school. First, I think it is in Venganur Grama Panchayat. The school totally run by a wonderful example of what Kudumbashree is doing there. I would now like Sabita Behera from Odisha, because she is another example of how SHG members are playing a key role in implementing government schemes. As a Jal Sathi, Sabita helps the Water Corporation of Odisha to provide consumer-friendly services on people's doorsteps. Sabita, आप बताइए कैसे आप सर्विस डिलीवरी इंश्योर करती हैं एंड कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्डअप करना, बिकॉज कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्डअप करना इज नॉट दैट इजी टास्क, तो आप कैसे करते हैं उसको बताएंगे? जी, सबको नमस्ते। मैं सबिता बेरा हूँ, उड़ीसा की जलसा थी। तो मैं ड्रिंक फॉर वाटर की से सर्विस कर रही हूँ। तो मैं पहले एक SSG कल्याणी ग्रुप से सिलेक्ट हुई हूँ। तो मैं जलसा थी हूँ
उड़ीसा का। तो पहले मैं तो हाउस होल्ड में जाती हूँ, पहले लोगों का पूछताछ करती हूँ कि उनका पानी सप्लाई आता है कि नहीं। जिनके घर में पानी सप्लाई नहीं आता है तो मैं उनका पानी सप्लाई करने के सब प्रॉब्लम जब जो जो भी होता है सॉल्व करती हूँ, और पानी का देने की उनके घर में सब काम करती है। मैं गवर्नमेंट ने मेरे को एमओपीएस मशीन दिया है, एमपीओएस मशीन। उसी से मैं उनकी जो जो जिसके घर में मीटर बिठाया है उनके मीटरिंग एंट्री करके उनके साथ पैसा कलेक्ट करती हूँ, और उनके जो भी वाटर का प्रॉब्लम होता है उसका टेस्ट करके उसका वाटर का प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हूँ। और मैं गवर्नमेंट और कंज्यूमर के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ा दिया है। जैसे कि पहले लोग डरते थे ये पानी कैसे ले, कहाँ कहाँ जाए, कहाँ पर जाएं, वो सब उनको दूर करके उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है मैम। That's और really एक wonderful. और एक हाँ जी, ओल्ड एज लोग रहते हैं, जैसे कि ओल्ड वोमेन मैन जो 40 के 50 ओल्ड होते हैं, वो लोग क्या ऑफिस नहीं जा पाते थे पैसे पेमेंट भरने के लिए, तो मैं उनके घर पे जाके उनका पैसा ले आ जाती हूँ, तो उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। Thank you. Thank you, Savita. I would now like Padma Tashi. She's from Lumsup, Ladakh. And now, Padma, please tell us, Lumsup, Ladakh has put Ladakh Pasmina on the global map. Tell us about the contribution of your group in improving local economy and maintaining ecological balance. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पद्मा दाशी। मैं लूम्स ऑफ लद्दाख में एज प्रोडक्ट मैनेजर काम करती हूँ। तो आपने मुझे आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था मुझे, और पहला क्वेश्चन ये था कि ग्लोबल मैप पे कैसे लाए हम लद्दाख पश्मीना को। तो जब हमने 2020-22 को एक जीए एक सॉरी थोड़ा जी पश्मीना को 2023 में हमने एक ब्रांड को मतलब बिल्डअप करने के लिए, पुशअप करने के लिए हमने एक जीआई पश्मीना को एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने उनको बिल्डअप किया था। हमने हमारे जितने भी लोग थे उन अवेयरनेस करने के लिए हमने बहुत सारे मेहनत किए थे। 2022 में फरवरी में न्यूयॉर्क में एक फैशन शो हुआ था, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन के पार्टनर्स ऑफिसर्स ने एक कैंपेन किया था, ग्लोबल कैंपेन, जिसमें 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते, 1 वीक के लिए हमारा जो लूम्स ऑफ लद्दाख का जो बिलबोर्ड पे, उनके न्यूयॉर्क के बिलबोर्ड पे लूम्स ऑफ लद्दाख का पूरा 1 वीक तक उन्होंने वहाँ पे टाइम स्क्वायर पे रखा था। और उसी तरह हम देश विदेश से जो टेक्सटाइल के बारे में पढ़ते हैं या टूर करते हैं, उनको पहली बार हमने लद्दाख में बुला के उनको हमारे जो पश्मीना है, वूल्स इंडस्ट्री है, उनके बारे में हमने उनको वर्कशॉप के थ्रू बताया। प्लस इसकी वजह से हमारे जो पश्मीना है वो पूरे अवेयरनेस किया था कि पूरी दुनिया को मालूम चला था उस वजह से। और ये तो हुआ कि मार्केटिंग और ब्रांड के बारे में। और प्रोडक्शन के बारे में बताया जाए तो हमारे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो रॉ मटेरियल से लेके एक फिनिश प्रोडक्ट बनने तक की सारे प्रोसेस जो है अलग अलग गाँव में होता है। लद्दाख के अलग अलग गाँव में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग सेंटर्स में होता है। टोटल हमारा 16 सेंटर है, जहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट होता है कि लद्दाख, चंगथंग और करगिल में। पूरे चंगथंग बॉर्डर से लेके करगिल के बॉर्डर तक के सारे जगह पे हम जितने भी वुमेन्स है उनको साथ लेके हम काम करते हैं। जितने भी एसएचजी है, गाँव में एसएचजी है, उनको साथ लेके फिर हम उनको उनके साथ काम करते हैं। और प्रोडक्शन के और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स जो लेडीज़ बनाते हैं उनको ना हम यहाँ पे इंडिया में ही सेल नहीं करते, हम बाहर भी सेल करते हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क में एक ओक्यूलस मॉल है, जहाँ पे कैनवस शोरूम है, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जाके वहाँ पे सेल होता है। उसके वजह से भी हमारे बहुत सारे कस्टमर आए हैं, अवेयर हुआ है कि पश्मीना के बारे में, कि पश्मीना कितना मतलब चंगथंग जैसे कोल्डस इतने ठंड एरिया से आया, तो बहुत जहाँ पे भी ठंड ज़्यादा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पश्मीना अच्छा निकलता है। तो वहाँ से आके उनको ये अवेयरनेस देने की वजह से हमें बहुत सारे कस्टमर्स भी मिले हैं और अवेयरनेस भी बहुत बड़ा है कि हमारे पश्मीना के बारे में।
और अपने दूसरा सवाल ये पूछा था कि हमारे ग्रुप ने इसको किस तरह से आगे लाया, किस तरह से इस ग्रुप ने आगे लाया। तो हम शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं रखते, हम लॉन्ग टर्म टारगेट रखते हैं। और दूसरा, हम अपने जितने भी हमारे हमारे जितने भी वीकनेस है उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि सारे वुमेन्स जो है एक पैशंस के साथ वर्क करते हैं। उनके पैशंस की वजह से उन्होंने अभी एक ऐसा लग्जरी ब्रांड बनाया है लूम्स ऑफ लद्दाख कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है उनके प्रोडक्ट के बारे में। इसके वजह से उन औरतों अपने घरों को भी इसी काम की वजह से ही चला पाते हैं, और इसकी वजह से वो लोग अपने फैमिली को इकोनॉमिकली हेल्प भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जितने भी कस्टमर्स है वो टूरिस्ट ही होता है, क्योंकि वो लोग जोग्राफिकली प्रोडक्ट जो जोग्राफिकली इंडिकेटेड करते हो उन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। प्लस उन औरतें ये सोचते कि हमारे जो इतने ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उनको हम प्रिजर्व करें, अपने जनरेशन टू जनरेशन प्रॉफिट उनको भी मालूम चले कि तुम्हारे दादा ये पहनते थे, हम ऐसे बनाते थे। इनको बचाने के लिए वो लोग एक ग्रुप बना के ये लोग प्रोडक्ट बना के हम हर दुनिया में बेचते हैं। तो तीसरे सवाल आपने ये पूछा था कि लोकल इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। तो हमारे जितने भी वुमेन्स है वो यही मानते हैं कि इको फ्रेंडली में बहुत विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए हम जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं या नेचुरल डाई करते हैं, क्योंकि हमारे यहीं पे जितना हमारे इर्द गिर्द में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हीं से ही हम लाके कलरिंग करते हैं, उनको डाई करते हैं। तो उसमें हमारे प्रोडक्ट को भी कोई हार्मफुल नहीं Thank you, Padma. Thank क्योंकि you. वहाँ This पे is a उस प्रोडक्ट very unusual work that we do not think that an SHG would be doing. We are now joined by Sunita Narayanji. Welcome, ma'am. Thank you, Snigdha. Thank you very much. And please go ahead. I'm listening to everyone. Thank you. I would now request Dr. Meenu Singh to tell us about her grand idea of roping in SHGs for delivering medicines to remote parts of Uttarakhand and the reason for her trust in the women. Thank Dr. you very Singh. much for inviting me, and congratulations all of you for this International Women's Day celebration, in which you are bringing forward the women who are at the forefront of self-help groups. And so let me give you a little background that we in Uttarakhand, I'm currently at AIIMS Rishikesh, and we found that our health services were lacking in access. Actually, there wasn't access for a large number of population to the health services, and which was like getting medicines or even getting consultations. So what we started doing was we wanted to use telemedicine in a big way, and we also wanted to deliver medicines, vaccines, or blood products to these difficult to reach areas. And then we got this idea, we knew that this could be done, and we started doing experiments on that, and we started distributing medicines which are used for treating tuberculosis. जैसे आपको मालूम है कि हमारा ये कमिटमेंट है कि by 2025 हम इंडिया को ट्यूबरक्लोसिस फ्री कर देंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है. Then we found that there is something which is known as Namo drone didis. Now, these Namo drone didis actually have been introduced in the agriculture sector, जिसमें मतलब वुमेन जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं उनको ड्रोन्स दिए गए थे अबाउट 15,000, एंड उसमें वो यूज कर सकती हैं उन ड्रोन्स को फर्टिलाइजर अपनी फसल के ऊपर डालने के लिए, या फिर पेस्टिसाइड्स विच आर लिक्विड पेस्टिसाइड्स उनका स्प्रे करने के लिए. और भी उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं विच आर द एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन्स इन agriculture. And as you know, agriculture also, if you grow healthy crops, you would also end up in having better health if you have better food which is grown. Of course, pesticides are not the one which is solution to that. You need to have more organic pesticides and farms. But
this is something which could be done through them. And it was also something which could be used for surveillance of populations, surveillance whenever there is a disaster, surveillance if there are some flash floods or if there is a forest fire, उनका भी वो पता लगा सकते हैं. और उसमें ड्रोन दीदीज का काम ये था कि एक तो they will load the drones, which is more simpler, and the second one is about being the drone pilot. That means you being able to navigate the drone with the help of technology, which is mostly housed in their mobile phones. और उससे वो उसको ड्रोन्स को मूव कर सकती हैं और उन ड्रोन्स को ड्राइव कर सकती हैं और उनको फॉलो भी कर सकती हैं. तो ये चीज हमने हेल्थ सेक्टर में इंट्रोड्यूस करी है अभी. और सिंस वी हैव सेवरल स्टार्टअप्स एक्चुअली व्हिच आर डूइंग drone medicine, they are trying to use drones for medicine and for health. So usi concept pe we started this service, the drone service in AIIMS Rishikesh, and then we roped in some self-help groups, the ladies in these various locations like New Tiri, then in Chinyali Sor or Chamba. These are some of the locations which are closer to the health facilities. जैसे जहाँ पे PHC, CHC या जिनको आरोग्य मंदिर कहते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, वो लोकेटेड हैं. वहाँ से हमने वुमेन को रोपिंग किया. और जैसे कि उत्तराखंड में आपको मालूम है बहुत से लोग आर्मी में हैं और बहुत से men have actually moved to the army and they leave the villages and women are mostly doing their work alone. So उनको फिर support करने के लिए those are the women whom we were able to contact better and then they got involved in this work. और अब ये हो गया है कि वो they have started loading the, like you have to put in a payload in case of drones. तो उनमें वो payload को load कर देती हैं जिसमें medicine होती हैं या वैक्सीन हो सकता है. और कई बार samples भी होते हैं, which could be blood samples or which could be sputum samples when there is TB patients that we are treating. तो उनको वो लोड करके और उनको वो वापस भेजती हैं और फिर उनसे वो पैसा कमाती हैं. उससे मतलब we tend to pay them and they are able to raise funds for themselves also through this service which is being provided to the patients. The aim तो यही है कि उनको इससे enrich किया जाए. पहले तो उनको empower करना है with this technology ताकि उनको एक नई तरह की जॉब जो है वो मिलनी शुरू हो जाए. और उसके बाद उस जॉब को कैसे सस्टेन करना है और उस सर्विस को सस्टेन करते हुए उनको कैसे एनरिच करना है सो दैट वो इंडिपेंडेंट हो जाए. उनके पास ये जो लड़कियां हैं ये सिर्फ 10th पास हैं और इनको हम 2 दिन का ट्रेनिंग भी देते हैं. पहले कुछ लोगों का ट्रेनिंग गुड़गांव में हुआ ड्रोन सेंटर में. अब हमने उनको ट्रेनिंग एम्स ऋषिकेश में भी देना शुरू कर रहे हैं जिसमें उनका करिकुलम और उनको किस तरह से एक्टिव ड्रोन के ऊपर कैसे एक्ट करना है. और अभी उनको पायलटिंग शुरू नहीं किया बट देयर आर सेवरल ड्रोन पायलट्स. गर्ल्स themselves are interested actually. There are now schools for drone piloting in Dehradun and other places where girls are also enrolling and they also want to do this work. So this has kind of started a new breed of individuals and girls who are forthcoming and who are promising, and they I think will lay down a very strong foundation for the future for women to be active in this particular field. इसके साथ साथ we are also training them for telemedicine, and you know that there were ASHAs, those accredited health activists which were part of NHM. तो इनको अब क्या है कि उनको हम चाहते हैं कि टेलीमेडिसिन भी वो यूज करें. दैट मीन्स यूजिंग देयर फोन्स और देयर कंप्यूटर्स. फोन ही ज्यादातर होता है तो उसमें वो ई संजीवनी यूज करते हुए दे कैन पुट अप अ कंसल्टेशन विद अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर. एंड देन वंस दैट कंसल्टेशन इज डन थ्रू द ड्रोन्स वी कैन सेंड देम द मेडिसिन्स. एंड उत्तराखंड आपको मालूम है कि बहुत ही तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं और 4 धाम यात्रा होती है जो अभी अप्रैल में शुरू हो जाती है. तो उस समय बहुत से लोग जो हैं उनको 4 धाम यात्रा के जो डिफरेंट स्टेशंस होते हैं उनके ऊपर उनको प्रॉब्लम हो जाती है. कई बार दे गेट हार्ट अटैक, कई बार उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है या कई बार कोई एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. तो उनको भी ट्रीट करने के लिए और उनका कॉन्टैक्ट डॉक्टर से एस्टैब्लिश कराने के लिए देयर आर डिफरेंट कियोस्क्स व्हिच आर मेड एंड वी आर पुटिंग सम पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आल्सो ओवर देयर. तो उन कियोस्क से को भी ये मैनेज करेंगे the girls who are being trained in this technology, and then they will be able to receive medicines and be called as drone DBs if they are doing drone work, and they can be given other names also when they are using technology for doing this kind of service which is absolutely new for this area at least.
That's wonderful. That's wonderful, Dr. Singh. Now, I am joined by Meena Devi ji, who has done something equally incredible. मीना देवी जी, आपने महिलाओं को इकट्ठा कर एक राइस मिल खरीद लिया, कुछ बताइए हमें उसके बारे में। मीना देवी जी, she was facing network issues. Let me just check. Okay. Yeah. I think Meena Devi ji is not here. So may I now request Sunita ma'am? Yeah, definitely, few words. Snigdha. I've heard everyone, I only missed Miniji, but I think the work is really incredible. And today on on the International Women's Day, I think it is absolutely right that we should celebrate the incredible movement of women that is happening at the grassroots of India. This is a movement where women come together. It's a self-help group. But the movement has gone beyond just coming together, which it started off and still continues to be a movement where women come, they pool their money, and the pooling of money gives them the strength to be able to do wise investments. The movement, the women I have seen in self-help groups have used the power of the investment to improve livelihoods. They've used the power of investment to improve the education of their children. And that's the mass, the scale of it is incredible. But what really amazes and impresses me, and I think that's what Down to Earth Story and all these incredible women who are with us today tell us, is how this power of this mobilization, this cooperative coming together of groups of people can be used to become entrepreneurs, can be used to become development agents. And that, I think, is where the real story of change today is. Because still now, even now, when we talk about self-help groups, we talk about them as women coming together to pool money and to make investment. And we also know it's an investment story, which is a very good one for banks, because this is where the default rates are very low. So microfinance, that's a story we have understood. But I think the groups that I'm hearing today, and I think Savita ji hain yahan par, and I'm sure Savita ji ne baat kari hogi ki kya Odisha mein jo kya kaam ho raha hai, kis tarah se jo self-help groups jo Odisha mein hain, they are today becoming managers of the solid waste, the MRF stations, of the FSTPs in the fecal sludge treatment plants in Odisha, of the food supply systems, as we have seen. The incredible work in Kerala. Kerala, I think, is a leader. The Kudumbashree movement in Kerala has always been one which has mobilized women, but has taken the work into development. And I think that is really, to me, a story which is still not understood in the country. And the power of women, it's apt today on World Women's Day to talk about that, because, when we talk about development, we talk about who will do the development work. And then we start looking at who are the actors, who are the people in society who will do it. And that's where a lot of it, we come down to private sector. But private sector costs are so high that we have not been able to find public services which are affordable. But this women coming together with their ability to be able to do good work, to be good managers, and to be empathetic to societal needs, that is a story which is completely different. And these are now development agents. So I think that is something that the Down to Earth cover story, in which we have detailed the work, is very important for us to be able to see the self-help groups as groups which are today becoming the new cooperative movement of India, the new entrepreneurs of
India's development story. And this is really where the power of providing livelihoods, like what Padma ji talked about in Ladakh, to be able to bring women together to provide livelihoods and to make sure those livelihoods get connected to the market is an incredible story. It's a change that I don't think any one of us understand sitting in cities. So I'm really grateful that we put this together, and I'm grateful that we were able to bring these voices together. And I would suggest, Nigda, if all the panelists, if starting with Mini Ji, if there is anything that they want to add, we have another 10 minutes, 15 minutes that they would like to add to this conversation, then you and I can wrap up. Mini, can I call upon you if you would like to add to this conversation? Yeah, ma'am. As ma'am said, it is a lot of livelihood aspects, livelihood activities going on in like other states in Kerala also. But see, as a poverty eradication mission, as other SRLMs and Kudumbashree is also doing all these things. But poverty means it's a multi-dimensional right now. Not only giving them money in their hands or also getting money from their livelihood also. If there is no one to work, if there is no one in the family, healthy one to work, how to do? In that case, Kudumbashree's involvement is there. That is the differently abled children's things I said then. If there is a one parent only in that house, she have to stay back at home for looking at the children. Then how can she go outside for work? So if we given livelihood also, she cannot be, sometimes cannot work. In that situation, these differently abled children are taking in a school with the support of Gram Panchayat and the government. So they're given the same aspect, same children will be there. They can do their own activities, that is making some handicrafts, paper pens, umbrella training. So they can given. Some of the mother also can support it to them and getting the earning to their family also. With that children, they can stay back there. That is the importance of the birds school. Another is also, as ma'am said, that food delivery system. Janagiya Hotel started in, that means popular hotel started in Kerala. That is at the time of flood, 2018 flood started, and almost all areas affected the flood. Then at that time, Kudumbashree have a good human resource. So government have the grocery and materials and who will cook. So the Kudumbashree take in charge of the cooking, and in one kitchen, actually food is a culture. So in one kitchen, they made the making food in that area, and Kudumbashree members are packing, and she delivered to the camp, disaster relief camps and disaster relief operations. A lot of people are engaged in that one. So giving support to that disaster management activities of the government also. Right now, recently, this week, the 2 days before, there is a program started at a lunch bell. Maybe ma'am also knows that the lunch bell. One click, the lunch will become to the officers. That is, right now it is started just in Trivandrum only, capital only, then planning to spread all over there in the clean and neat tiffin box, and Kudumbashree members are delivering this one. Wonderful. So, yeah, it is a very good livelihood for them also. Actually, the Janagiya Hotel concept is come from this community kitchen. So can we think that in 20-25 rupees, a good meal they can produce? All Panchayat, there is the Janagiya Hotel right now by the leadership of the Kudumbashree. Actually, Kudumbashree is running this hotel. And a few members also getting their livelihood also, but not much interest or not much profit they are not getting. But they can run their families. But Miniji, there's also another point to this, and I think that is the power of it. You've got women, you've got them running a public service, you've got them running it at low cost, you've got them supplying good food to large numbers of people, and that food is home cooked, the whole food is nutritious, the food is something that will do good to people,
that they will not be eating junk food. So look at the change that you're bringing in society by doing this. So this is really an incredible. Hinaben, if you could now talk a little bit about the work that you are doing. I have my colleague Richard who has asked something, I think, also to you. Please. Okay. And Minnie ji, I'm going to ask Hina Ben now. Just 1 minute. Hina, Okay. हाँ जी, बोलिए, आप बताइए। अगर कुछ बताएंगी अपने काम के बारे में। जी हाँ, जैसे मैंने आगे बताया वैसे हमारे सेवा में हमारी बहनों की खुद की जो ये एसएचजी ग्रुप के द्वारा ही बहनों ने सोशल एंटरप्राइज शुरू किया है, जिसमें एक रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी है जो फार्मर्स बहनों की खुद की कंपनी है। बहनें खुद उत्पादक है लेकिन वो मालिक और मैनेजर नहीं है। तो ये कंपनी के द्वारा हम उसको मालिक और मैनेजर कैसे बनाएं। तो कंपनी से डायरेक्ट बहनें खरीदती है, किसान से खरीद के उसका सफाई पैकिंग करके मार्केट में, रूडी की प्रोडक्ट का नाम हमारी रूडी है, जो रूडी यानी स्वच्छ, सुंदर, ब्यूटीफुल। और दूसरा रूडी का नाम हमने रखा है कि हमारी सेवा में जो 71 में जब हमारा सेवा शुरू हुआ 72 में, तब सबसे पहले जो बहन मेंबर बनी थी उसका नाम रूडी था, रूडी बहन था। तो हमारी जो भी सोशल एंटरप्राइज है उन सबका नाम हमारी बहनों के नाम पर ही होता है। जो बहन आगे आके जो अपना खुद का एक वो दिखाती है हुनर, तो उसी के नाम पर होता है ताकि उनका एक ओनरशिप रहे। तो ये रूडी का नाम इसी तरह से हमने रखा है। दूसरा हमारा गीतांजलि का प्रोडक्ट है, जिसमें जो अर्बन में, शहर में जो बहनें कागज बिनने वाली है, तो कागज कलेक्शन करके हम उसका पूरा रिसाइकल करते हैं, उसमें से नोट, पेन, फाइल, फोल्डर ये सब बहनें बनाती है। तो उसी से वो बहनें रोजगार ले रही है। तो हीना इस तरह जी, से जी एक सवाल आया है आपके लिए। वो है, हाउ द एसएचजी मूवमेंट हैज क्रिएटेड अ पॉलिटिकली एम्पावर्ड वुमेन मूवमेंट। जो हम लोग ऐसे जी सरकार के साथ लिंक भी करते हैं। थोड़ा आप मुझे समझाना भी हिंदी में, क्योंकि मैं समझ नहीं सकती इंग्लिश में। एसएचजी मूवमेंट जो है ये किस तरीके से पॉलिटिकली एम्पावर्ड वुमेन मूवमेंट बनाया है। औरतों को किस तरह से आपने जागरूक किया कि वो सोसाइटी के अंदर काम कर सकें इन चीजों के साथ, ये सवाल है आपसे। थैंक यू। और एक और सवाल था, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा जी का, जो है मिनी जी के लिए, और जो इसके बाद हम लोग पूछ लेंगे कि हाउ डू यू मैनेज टाइम। बट हिना बहन, आप बताइए कि औरतों को किस तरह से जागरूक करती हैं, किस तरह से साथ लाती हैं इस सारे काम के लिए। जो हमारा सेवा जो संगठन है वो बहनों का खुद का है। तो जो बहनों की जरूरत है, बहनों की जो नीड है, वही हमारा काम होता है। तो हम जो जब भी गांव में जाते हैं, बहनों की क्या समस्या है, ऐसा नहीं कि कोई कार्यक्रम आया और हमने काम किया, लेकिन हमारा जो काम है वो नीड बेस्ड एंड डिमांड बेस्ड है। और हमारा यूनियन एंड कोऑपरेटिव, यूनियन जो सेवा है, यूनियन का काम की जो पॉलिसी एस्पेक्ट है, सरकार के साथ नीति विषयक जो बदलाव लाना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ाना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है, तो वो सेवा कर रही है। और कोऑपरेटिव, क्योंकि यूनियन और कोऑपरेटिव दोनों साथ में रख कर चलेंगे तो बहनों का धंधा रोजगार मजबूत करेगा। सिर्फ अकेला यूनियन की नारेबाजी करेंगे या लड़त करेंगे तो इससे बहनों की रोजगारी और इससे बहनों सक्षम नहीं हो सकती। तो यूनियन एंड कोऑपरेटिव का हमारा अप्रोच रहा है। और ये कोऑपरेटिव के द्वारा हम बहनों के जो खुद के ट्रेड है, ऐसा नहीं कि उसको नया सिखाए, लेकिन वो उसके खुद के ट्रेड है, उसमें हम क्या नया टेक्नोलॉजी लाए, क्या नया इनोवेशन लाए, तो बहनें अपने आप जुड़ती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर सॉल्ट वर्कर, लिटिल रन ऑफ कच्छ है, वहां पर सॉल्ट वर्कर बहनें हैं जो नमक का खेती करती है, नमक पकाती है।
तो ये बहनें आजादी पहले से नमक बना रहे, आज उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी आ रही है नमक की खेती में। लेकिन एक ही पद्धति का वो लोग नमक करते थे। जमीन में से पानी निकालो पंप से और प्रोडक्शन करो और व्यापारी को बेच दो। मार्केट क्या है, बाजार क्या है, क्वालिटी क्या है, बहनों को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब सेवा के संगठन में बहनें जुड़ी, तो हमने पूरा एक मार्केट सर्वे करके बहनों को बोला कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो दूसरी जगह भी आप बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको व्यापारी के पास ही बेचना है, बीच में जो मिडल मैन है उसी को देना है, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट मार्केट लिंक। तो बहनों को हमने मार्केट खड़ा करवाया, जैसे टाटा है, यूनिलीवर है, लोकल 2-3 कंपनियां हैं। उस तरह से हमने मार्केट लिंकेज किया बहनों के साथ डायरेक्ट एसएचजी ग्रुप का, ताकि बहनें खुद उसका पूरा दाम ले सके। फिर दूसरा हमने किया कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में 75% कॉस्ट डीजल कॉस्ट में जाता था। तो वहां हमने डीजल की जगह सोलर सिस्टम का पायलट किया कि अगर हम सोलर सिस्टम बहनों को सपोर्ट करें एसएचजी ग्रुप के द्वारा, वो लोन लेके खरीदे और उसका जितना भी डीजल बचता है उतना ही वो हफ्ता भरे। तो उस तरह से अगर बहनों को फायदा होता है तो 5 साल में बहनों का खुद का ये एसेट हो जाएगा सोलर पंप, और बहनें 5 साल के बाद जो भी डीजल का खर्च है वो बचा सकती है। तो हमने वो पायलट में देखा कि जहां बहनों को 55 से 60 हजार डीजल खर्च होता था 8 महीने के सीजन में, वहां पर इस सिस्टम लगाने से उसका 15 से 20 हजार ही खर्च हुआ। यानी 40 से 45 हजार रुपया उसका बचत हो गया डीजल कॉस्ट सोलर सिस्टम लगाने से। तो ये 10 पायलट किया तो उससे बहनों को पता चला, तो और डिमांड, क्योंकि लिटर रन ऑफ कच्छ में 50 हजार ऐसे सॉल्ट वर्कर बहने हैं जो ये नमक का खेती कर रहे हैं। तो दूसरे साल बहुत सारी बहनों की डिमांड आने लगी। अभी 5 हजार ऐसी बहनें हैं लिटर रन ऑफ कच्छ में जो सिस्टम यूज कर रही है। और सरकार को भी हमने बोला कि ये इतना महंगा सिस्टम है, वो 5 साल के बाद क्लियर हो सकता है, तो अगर आप उसको इंटरेस्ट सब्सिडी दो तो वो 2 साल में भी सस्टेन हो सकती है। तो नहीं, सरकार को भी ये लगा और सरकार ने इसके ऊपर 80% सब्सिडी दी। तो अभी बहनें एक ही साल में सिस्टम को क्लियर कर सकती है बैंक के लिंक के साथ। तो वो इस तरह से एसेट क्रिएशन होता है और बहनों की नीड के हिसाब से हम काटते हैं, तो बहनें अपने आप संगठन में जुड़ती है। नो, बहुत बहुत अच्छा। मिनी जी, आपके लिए एक सवाल है। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू मिनी, दैट Raj would like to get your details. I think we can send them to you. Send it to him. He wants to do a case study on Kudumbashree movement. I have a general question to all the women, and जो भी इसका जवाब देना चाहेगा, कि अगर पद्मा जी मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह से आपने जो काम किया है, क्या लद्दाख के अंदर और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, और आपकी जो एक्सपीरियंस रहा है, जो इंस्पिरेशन है आपसे, वो हम आगे कैसे ले जा सकते हैं? पद्मा जी। एक्चुअली मैम ने ऐसे ग्रुप्स भी हमारे अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स है लद्दाख में, जो लेना लद्दाख है, चिकमेट कुटुर है, ऐसे भी ग्रुप्स है, बट हम इनसे थोड़ा सा हटके करते हैं क्योंकि हम एक ऐसे कोऑपरेटिव बना रहा है कि सारे औरतें हर जगह से, चंगथंग के बॉर्डर से लेकर करगिल के बॉर्डर के हर वुमेन्स को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दे के उनको एक साथ लेके चलते हैं। और दूसरा 3 साल में ही उनको, हम यहाँ पे 3 साल में ही इलेक्शन होता है हमारे अंदर डेमोक्रेटिक रहने के लिए। तो 3 साल में इलेक्शन होता है, तो 3 साल में ही उनको अपना क्वालिटी जो अपने अंदर जो पैशनेट्स होगा उनको, तो इलेक्शन होता है सीओ का, कैशियर का, जो भी हो उनका इलेक्शन होता है। उनसे ही हम क्योंकि उनसे हम ट्रेनिंग भी देते हैं, जितने भी वुमेन्स हम 2 मंथ का ट्रेनिंग देते हैं
क्योंकि फरवरी में भी एक देते हैं, सितंबर भी एक देते हैं। तो जितने भी वुमेन्स है जो हर्डर्स बिलोंग करते हैं चंपा कम्युनिटी में, तो उनको एक साथ लाके उनको ट्रेन करते हैं उनके सेल्फ सफिशिएंट के लिए, क्योंकि ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है लद्दाख में, क्योंकि जॉब ज़्यादा नहीं मिल रहा है लड़कियों को। और यहाँ चंपा की कम्युनिटी जो है वो अपने स्किल को भी खो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि एम्पावरमेंट बढ़ रहा है। तो इसीलिए लूम्स ऑफ लद्दाख इस लिए काम करते हैं। और दूसरा जो है लूम्स ऑफ लद्दाख अब ऐसा लग्जरी ब्रांड बन गया है, अब बाहर से भी कंपनी आने लग गया है कि मैनिपुलेट कर सके। तो हम उनको ऐसा ट्रेन करते कि बाहर के लोग आए अगर मैनिपुलेट करने के लिए, तो हम उनको उनके अगेंस्ट खड़ा हो सके उन औरतों को। ऐसे भी हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं बहुत अच्छा, एक बहुत साथ जुड़ के। मीनू जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या समझती हैं कि इसको कैसे आगे ले जाएं, जो आपका काम है, incredible work to train women, make them self-sufficient and use them for such a critical service of providing medical care to remote areas. What more and what are the policy changes that you feel that will help your work? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्रिटिकल वर्क जो है वो वुमेन बहुत अच्छे से करती हैं. We find that they are very committed and they are very, very, very responsible for whatever work they are given. मतलब ये चीज हमने नोट की है कि even if their educational status is less, they are most willing to do the work, the serious work, and they can be trained to do that. So सबसे पहली तो बात ये है स्केल अप करने के लिए, एक तो उनको अपॉर्चुनिटीज इस तरह के कॉन्सेप्ट को ही मिलनी चाहिए पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये लकीली हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है. इनफैक्ट तो उन्होंने जो सारे एम्स हैं हमारे, जैसे 22 एम्स वी हैव, सो उनमें उन्होंने कहा कि लेट अस स्टार्ट ड्रोन सर्विसेज एंड फॉर मेडिसिन फॉर हेल्थ, and let us have only women do the work, and call them drone deities. So इतना उससे पेट्रोनाइजेशन उनको मिला, तो वो एक तरह से एक एग्जाम्पल बन गया है कि हेल्थ सेक्टर में इनको इस तरह से यूज करना है. बट हेल्थ सेक्टर इज नॉट द ओनली सेक्टर वेयर दे कैन बी हेल्पफुल. एक्चुअली जैसे मैडम मिनी बता रही थी कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लीजिए अगर किसी क्राउडेड एरिया में जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दीस डेज इट्स really a pain to reach some of those areas because seeing the traffic on the roads. So जैसे Swiggy also has used actually drones for distributing food products. So these women self-help groups जो मतलब they can use for transport, transporting their products and distributing them like food, which has to be kept free and within minutes it reaches the consumer. So there also it can be used, and we should make it more popular. We should popularize that. We should write more stories about it so that people get to know that there is a service like this which is reliable and which is cheap also. इतना महंगा भी नहीं है ये. And now there are drone service providers who would be very, like, they would love to collaborate with all these people so that they can help them, and in the return they'll also get some benefits out of this. और ये चीज जो है ये it is, मतलब the way we sell this idea to the government is that this is not only helping women, it is, one is that they are staying in their homes and they are working close to their homes from where they can send their products, and even telemedicine also can be done from home and from their local place. They don't have to leave their home and children to do this work. That is one thing. And secondly, it is very energy saving because otherwise आपको यही चीज लेके जानी है अगर गाड़ी से, तो उसमें कितना पेट्रोल खर्च होगा, कितना उसका कार्बन प्रिंट बनेगा, कितना प्रॉब्लम उससे होगा. सो वो सारी चीजें इससे address hoti hai, and it is very environment friendly also. Only thing is we have to be very careful and we have to train our people. So second thing is training, so it should become part of some technical training institutions, because आजकल जो भी technical training जहाँ पे मिलती है बच्चों को, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, so they should be training these people, and we should offer this training to people who have done their graduation or their +2 and they are good with their hands. आजकल every child is very good with computers and mobile phones at least. So उनको हम train कर सकते हैं इन सब चीजों की distribution के लिए. And in difficult to reach areas like Ladakh, like Uttarakhand, like Northeast,
तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। और नॉर्थ ईस्ट में ये एस्टेब्लिश हो गया है कि वहाँ पे भी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वैक्सीन वाज डिलीवर्ड यूजिंग drones. And similarly, we've been looking at opportunities in Ladakh also. We were collaborating with the hospital in Leh, in which, after telemedicine, the next step is, because telemedicine, say you're giving consultation, but you're not giving medicine, which is crucial and critical for saving a patient. So उस तरह की मेडिसिन जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज या जो ब्लड bleeding stop करने के एजेंट्स होते हैं, they can be transported, and the physician or the health worker over there, who can be a drone देवी, who can be told कि वो किस तरह से उस पेशेंट को थोड़ा बहुत look after कर सकते। Wonderful. Wonderful. So, Snigdha, we have a few questions. I'm just wondering, we're also running short of time. Yeah, there is one interesting question that I would like somebody to answer. Like, how do SHG women find time for all the work they do? तो You should answer it. टाइम तो उनके पास होता ही है एक्चुअली। अब मुझे लगता है कि टाइम उनके पास होता है, इसीलिए ये सब कर पाती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सारा टाइम घर का काम ही करती रहे। इफ दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स एम्प्लॉयमेंट इन समथिंग, तो दे वुड लाइक टू वर्क। इट इज लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, एंड उससे उनका आमदनी भी होती है और उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, एंड दे फील एम्पावर्ड दैट दे आर डूइंग समथिंग मोर फॉर द फैमिली। There is also another question about education, if SHGs can focus on education and artistic development. हिना जी, आप इसमें बताएंगे? If SHGs should focus on education के ऊपर SHGs जो है फोकस करेंगी या कर रही हैं, आई एम श्योर। जी, एजुकेशन के ऊपर जो एसएचजी ग्रुप है, बहनें अपने बचत ग्रुप में ऐसे नियम भी बनाती है कि हम लोन लेंगे तो किस किस के ऊपर लेंगे, तो उसमें एजुकेशन भी एक भाग रहता है। तो वो अपनी बच्चियों को पढ़ाती है, उसका ट्यूशन का फीस है वो भी करती है। और ट्रेनिंग, जो बहनों को खुद को जो ट्रेन करना है एसएचजी ग्रुप में, ये ग्रुप का महत्व क्या है, उसको कैसे चलाना है, तो वो हमारे जो लीडर बहनें हैं वो बहनों को ट्रेनिंग देती है, एजुकेशन देती है। और फिर दो प्रकार का, एक तो बहनों को खुद को ये सब ट्रेनिंग चाहिए, और दूसरा बहनें खुद अपने बच्चे लड़कियों को खास करके पढ़ाने में लोन लेती है इंडिविजुअल, और उसमें से अपनी लड़कियों को पढ़ाती है। और टाइम की बात बताए तो बहनों को गांव में ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए आगे निकलने के लिए। तो जो ये एसएचजी ग्रुप है वो बहनों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकती है। That's interesting. Snigdha? Yeah. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्निग्धा, वी शुड रैप अप नाउ, क्योंकि 4 बज गए हैं और सबको जाना है, मैं जानती हूँ। If would you like to give some last comments, and then I can also wrap up. Snigdha, please. No, it was wonderful. Like, it's a learning experience when we hear from these women what actually they do and what is the importance of their work and how it affects their whole community. No, wonderful. But Snigdha, if we look at also the chat questions, and I think there is a lot of interest in learning more. And I would suggest that if people have asked for email addresses, particularly of Mini Ji and Hina Ben, if you could put them on the chat, then people can get in touch. I think if more case studies are done on the power of SHGs, and also some of the questions that were asked today about the financial sustainability of the issues of governance of SHGs. I think it is a very important movement that is happening in India. I also agree with Hina Ben that when the SHGs that I have seen, when they take a decision on what to invest, education is always at the top of it for their children. It's livelihood and education. And I think that's a very important part of the empowerment that is happening in India, where women are educating, are spending their money on the education of their children.
The issue also is about financial sustainability. But from what I have seen and from the from the detail that you brought out also in the magazine, the case studies of the different SHGs and the work in development, these are models in terms of how groups of people can come together and run businesses and operate businesses. And they can do that at a scale, and they can do that at costs that nobody can compete with. And they can also do it in a way that is much more responsible, much more ethical. That's what Padma talked about, how they are sustainable, how they are ethical, how they are responsible as a business. When you look at the Kudumbashree work and you look at how women are providing food, this is home, nutritious food, and at costs that nobody can compete with. So this is a new model of business that you are seeing. It's a new model of delivery of development services that we have never seen before. And I think this is where we need to understand just the scale and the power of the change that is happening in India, and the power that is the change that is happening through the hands of women in the country, something that often we don't realize, and the scale we don't realize. I mean, when I read the Down to Earth story, just reading the number, the millions of SHGs that exist. Now, I know in a country like India, you say millions, and you say, okay, so there'll obviously be some great, some not so good, but just look at the transformative power of bringing women together to make development work. And I think this is what India's SHG story tells us. It's a story which is unparalleled in the world. It's a story which is extremely inspirational. And I think from our point of view, Snigdha, we should keep writing about it, because these are stories that must be understood across the world and must become inspirations for many more to do more work. It's a perfect tribute for the International Women's Day today, where we are celebrating the work of such exemplary groups of women who are making development work. So thank you very much, everyone. Ambali, I think the research that you're asking, the questions you're asking, you will have to do them as part of your research. But I hope that you will find more, and I hope that all this will amplify the incredible work happening in India, in different parts of India, where women are coming together to be change makers. Thank you very much for joining us, and we will definitely hope to keep this conversation going. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you.